There's a normal tendency that when a stock appreciates, you make good returns, you sell that. But again, if you really held on to some of those investments, right, they would have been really multi-baggers. After, यहाँ आप देखिए कि मार्केट में कोविड के बाद बहुत बड़ी रैली आई मार्केट में, और ये साल में काफी नेगेटिव न्यूज फ्लो आई है मार्केट में. इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली यूएस फेड ने तेजी से बढ़ाए हैं और इन्फ्लेशन काफी मात्रा में ऊपर आई है. हमने देखा है पास्ट में जहां पे बड़ी तेजी आती है तो कुछ न कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट में करेक्शन आती है. तो इसीलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स अगर थोड़े कॉशियस थे, थोड़ा कैश साइड में रखे कि मार्केट में करेक्शन आएगी, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी मात्रा में करेक्शन आई है. इनफैक्ट वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही है. इंडिया में हम लोग ने काफी जो ग्लोबली यूएस वगैरह में ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे काफी स्टिमुलस दी थी गवर्नमेंट ने, लिक्विडिटी ईज ऑफ हुई थी, इंटरेस्ट रेट्स काफी जोर से नीचे आए थे. तो वो जैसे अनवाइंड हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट वहां पे ग्रोथ पे आएगा आगे जाके. डाउन द लाइन से 6 months डाउन द लाइन आई थिंक क्रेडिट रिस्क फंड्स विल स्टार्ट टू लुक मोर अट्रैक्टिव बिकॉज द yields will look better, and investors with a slightly higher risk appetite can look at investing in these funds with at least a 3-year view. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. तो जैसे आप सबको पता है, म्यूचुअल फंड्स की बात जो एपिसोड्स होते हैं उसमें हम ग्लोबल कंडीशंस, इंडियन मार्केट कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं. और हर एपिसोड में हम एक रिनाउंड पर्सनालिटी को लेके आते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है. तो आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव विद अस मिस्टर महेश पाटिल. मिस्टर महेश पाटिल जो हैं वो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के सीआईओ हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं. उनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट में. मिस्टर महेश पाटिल होल्ड्स अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. उन्होंने जो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई किया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद. मिस्टर महेश को सीआईओ ऑफ द ईयर इक्विटी का भी अवार्ड मिल चुका है बाय एशिया असेट मैनेजमेंट इन 2016 एंड 2018. उनको चेयरमैन्स अवार्ड भी मिला है, चेयरमैन्स इंडिविजुअल अवार्ड बाय द आदित्य बिरला ग्रुप फॉर बीइंग अकम्प्लिश्ड लीडर इन 2015. हेलो एवरीवन. हेलो महेश जी, वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात. We are truly honored to have you with us, and so today of course आज ये इंटरव्यू हम हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं, and we would love to get your views on the different questions that we're going to ask you. So Mahesh sir, before we really start off with the conversation, and इससे पहले कि मैं आपसे सारे सवाल पूछूं, I think हम सब आपकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. So if you could tell us a little about your personal investment journey. Sure. So my personal investment journey started, relatively very early, right? When I was doing my MBA, right? And this was in 1992-93. And that was a time when actually India was going through a transformation, right? We talked about this liberalization and globalization, right? This was the Narasimha Congress government, which actually unshackled Indian economy. And that's when we saw Indian economy open up to foreign investors. And we've seen since that, right, the equity markets have done well. And that was a period also where I think you require some kind of a trigger also to get attracted, right? So we had this big bull run, which was the Harshad Mehta bull run, which was the biggest, the short time frame when you see the markets really go up. So that really got me excited there. My dad also used to make investments. He started investing very early, investing in some of the blue chips. And he used to talk about some of these investments which he had done, how they had appreciated some of these blue chip stocks. So that's how it started. But initially it was more about hearsay, right? Doing very less fundamental research. But then when I started to pursue a career as an equity research analyst, later, that's where really I started analyzing company properly, right? Understanding the businesses, what is the right value to pay for a company? Because that is always a dilemma, right? Where this is the right price. So after getting formal education and after doing a proper research, that's where my real investment journey started. And that too also in the initial period, it was more about investing into sectors, obviously, which you're more comfortable with, which you understand better, right? So like, for example, being an engineering background, okay, I was more comfortable investing into some of the technology companies or the engineering companies and capital good companies, which were very less discovered at that point in time, right? In those days, there were very people who could really understand that, and really
knowing about this company, what are the key drivers of that, was able to really make good handsome returns over there. So that's how I think the journey started. And then over a period of time, we've seen various cycles, right? You get sucked into various cycles, and that's the learning, like the dot-com bubble, which was there in 2000, where I remember investing. I had knowledge of some of these technology names, right? But invested big money, but didn't really sell down and book profits over there when things become over exuberant. One got carried away, okay, and that was again a learning that whenever there is irrationality in the market, okay, one should probably step back a bit, right, and try to protect some of the gains. Again, I think, and I've seen that a lot of investments which I had done, okay, good companies, I probably sold them early, right? When you There's a normal tendency that when a stock appreciates, you make good returns, you sell that. But again, if you really held on to some of those investments, right, they would have been really multi-baggers. So I would advise that after you have done a proper research, work on a company, you've identified a company based on its business prospects, evaluate the management, then allow that investment to grow and prosper, right? Because sitting on your investments, good investments, I think that's how your wealth gets compounded rather than trying to trade and get in and get out, because you're not able to always find a good company. But once you have found a good company, okay, and over a period of time, I think betting on the right management, I think, is the most important thing I've seen. Because if you bet on the right management, then the management is actually working for you. Okay, they are taking the right decisions in terms of what business to take, where to allocate the capital, how to grow their business, right? How to really manage it during difficult times, and that's how I think over a period of time you understand the management, you're comfortable with that, and that really compounds your wealth. So yeah, so I think it's been a long journey, and a few learnings as I've seen in that period. Sticking to your basic, doing the basic fundamental research, investing into sectors in which you are more comfortable, understand those, betting on the right management, and then staying on to that investments for long term. It's what will really create wealth. I mean, I'm sure आपके learning से हम आपकी experience से हम और भी बहुत सीखेंगे in the next 1 hour or so that we're going to spend time with you. तो महेश सर, अभी अगर हम general opinion देखें तो हर किसी को लग रहा है कि global recession आने वाला है, right? एंड अगर Right. हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ पे काफ़ी रिलाई कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मार्केट क्रैश आएगा. मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में आई एक्चुअली सीन पीपल जिन्होंने कैश होल्ड करके रखा हुआ है टू वेट फॉर द नेक्स्ट बिग क्रैश, राइट? सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि हमें ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट के लिए वेट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सो आफ्टर यहाँ आप देखिए कि मार्केट में कोविड के बाद बहुत बड़ी रैली आई मार्केट में, और सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी तेजी से ऊपर आ गया है. और ये साल में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है मार्केट में. इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली यूएस फेड ने तेजी से बढ़ाए हैं, और इन्फ्लेशन काफ़ी मात्रा में ऊपर आई है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ था. तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट, इसके लिए इतनी तेजी के बाद मार्केट रैली होने के बाद लग रहा था कि एक शायद करेक्शन आ सकती है, राइट, मार्केट में. और हमने देखा है पास में जहाँ पे बड़ी तेजी आती है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट में करेक्शन आती है. तो इसीलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स अगर थोड़े कॉशियस थे, और थोड़ा कैश साइड में रखे कि मार्केट में करेक्शन आएगी, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी मात्रा में करेक्शन आई है. इनफैक्ट देखा जाए जैसे कि S&P और नैस्डैक में 25-30% ऊपर से मार्केट करेक्ट हुआ है. सो बट इंडिया मार्केट में इतनी करेक्शन जिसकी उम्मीद थी वो नहीं आई है, और इन्वेस्टर जो वेट कर रहे थे प्रॉब्ली मिसिंग ऑन. बट मैंने देखा है कि मार्केट में टाइम करना और करेक्शन के लिए वेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है. प्रेडिक्ट करना कि कहाँ पे करेक्शन होगी, राइट. तो जो आपका जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, राइट, जो आप स्टेडी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म, वो तो आपको करते रहना चाहिए, राइट. और जो कभी आप लमसम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, लमसम करते हैं, वो शायद आप वेट कर सकते हैं, राइट, कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए, तो मार्केट अभी शायद एक्सपेंसिव लग रहा है तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं. बट जो आपका नॉर्मल एलोकेशन इक्विटी की तरफ, और फॉर एग्जाम्पल इक्विटी मार्केट में डिसाइड किया है कि मंथली SIP, वो तो आपको आई थिंक
कतई ही उसको रोकना नहीं चाहिए, राइट। और इंडिया में एक्चुअली करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली बिकॉज एक इंडिया की जो ग्रोथ है इकोनॉमी, राइट, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही है। इंडिया में हम लोग ने काफ़ी जो ग्लोबली यूएस वगैरह में ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे काफ़ी स्टिमुलस दी थी गवर्नमेंट ने, लिक्विडिटी ईज ऑफ हुई थी, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी जोर से नीचे आए थे, फिजिकल स्टिमुलस दिया था। तो वो जैसे अनवाइंड हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे ग्रोथ पे आएगा आगे जाके। इंडिया की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी कोविड के बाद, और वो सस्टेन कर रही है। काफ़ी सेक्टर्स अभी इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, जो इवन प्री कोविड के वर नॉट डूइंग वेल। एंड इन इंडियन इकोनॉमी को एक्चुअली बेनिफिट भी एक तरह से मिला है बिकॉज पोस्ट कोविड हमने देखा है कि चाइना वाज अ बिग सप्लायर टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट। काफ़ी कंपनीज, यूएस कंपनीज वगैरह चाइना से सोर्स कर रही थी। तो कोविड के टाइम में जो डिस्ट्रप्शन देखा उसके बाद काफ़ी बड़ी कंपनीज ने डिसाइड किया कि उनको चाइना के अलावा भी सोर्स करना चाहिए, तो चाइना प्लस वन एक पॉलिसी होगी। वहाँ पे काफ़ी इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिला बिकॉज इंडिया बिकेम अ ऑल्टरनेटिव बेस, राइट, फॉर चाइना। एंड अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पास काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिस थिंग सप्लाई, स्पेशली यूरोप में गैस प्राइसेस वगैरह बढ़ गई है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो वहाँ से भी देख रहे हैं कि कहाँ से आउटसोर्स करें। इंडिया में हम लोग ने देखा है कि लास्ट एक एक साल में, लास्ट 9 मंथ्स में ज़्यादा बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन कहाँ पे भी नहीं हुई है, राइट। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ है वो स्टेडी बढ़ रही है। फ्यूल साइड में भी ऑयल या गैस में कुछ तकलीफ नहीं मिली हम लोग को। और इंडिया में कोल जो है प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट है। सो इसके कारण जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वहाँ पे हमें कुछ इधर बड़ी मात्रा में कॉस्ट भी नहीं बढ़ी और कोई डिस्ट्रप्शन भी नहीं था बिकॉज जैसे कि चाइना में फॉर एग्जांपल अभी भी लॉकडाउन है, राइट, अभी भी वहाँ से पूरी मात्रा से कोविड से निकल नहीं पा रहे हैं। इंडिया में हम लोग ने काफ़ी पहले ही लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं और एवरीथिंग इज प्रीटी मच नॉर्मल। सो इंडिया has been able to supply to the global supply chain in a big way, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिला। एंड डोमेस्टिक ग्रोथ जो है इंडिया की, जो ग्रोथ इकोनॉमी की, वो डोमेस्टिक ग्रोथ पे ज़्यादा है रादर देन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, राइट, और डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। सो वो एक कोविड के बाद स्टेडी रिकवरी दिख रही है, जैसे कि ऑटो सेक्टर में हो गया, राइट, जैसे कि कंज्यूमर सेक्टर में वी हैव सीन नाउ ग्रोथ अगेन कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। और एक्सपोर्ट सेक्टर में जहाँ पे इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कि आईटी सेक्टर हुआ, वहाँ पे इतना ग्लोबल जो स्लो डाउन जो फियर है उसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज आईटी सेक्टर में अभी जो स्पेंड हो रहे हैं वो डिजिटल की तरफ हो रहा है, राइट। सो काफ़ी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें अभी भी काफ़ी पीछे है, उनको काफ़ी स्पेंड करना है, तो वो स्पेंड इतनी जल्दी कट नहीं होगा। सो आईटी कंपनीज का जो ग्रोथ इंडिया को जो बेनिफिट मिला था लास्ट 1-2 साल में, आई थिंक वो कंटिन्यू होगा। ग्रोथ रेट थोड़ी कम होगी बट एकदम से कोलैप्स नहीं होगी वहाँ पे। और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स अपने फार्मा सेक्टर में है, राइट, वहाँ पे भी ग्लोबल स्लोडाउन का फार्मा सेक्टर इज स्लाइटली लेस इम्यून टू दैट, राइट। सो आई थिंक ये सब देखते हुए एंड इंडिया की जो ग्रोथ है वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इंडिया में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुई है वो भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, राइट। और इन्फ्लेशन जो कंसर्न था यूएस वगैरह में, जहाँ पे बड़ी मात्रा, इंडिया में इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5% और सो, राइट, विच इज नॉट वेरी हाई कंपेयर टू हिस्टोरिकली व्हाट वी हैव सीन। सो तो इस तरह से ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी है और आरबीआई की जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज वो भी आई मीन धीरे धीरे बढ़ रही है, इतना एक्सेसफुली नहीं बढ़ रही है। तो उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी को नेगेटिव इतना ज़्यादा नहीं है। एंड कंपनीज की बैलेंस शीट्स काफ़ी इंप्रूव हुए लास्ट 1-2 साल में, राइट। काफ़ी कंपनीज कॉर्पोरेट की हेल्थ इंप्रूव हुई है, डेट था जो कंपनीज के बैलेंस शीट पे वो काफ़ी नीचे आ गया है। सो तो हायर इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट जो आएगा अर्निंग्स पे वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो ओवरऑल आई थिंक इंडिया की जो आउटलुक है, ग्रोथ आउटलुक, वो काफ़ी ठीक ठाक है। एंड इसके कारण हमने मार्केट में यहाँ पे जो इम्पैक्ट लग रहा था कि ग्लोबल की जो कंसर्न्स है वो नहीं दिख रहे। एंड डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो है इंडिया का, जो हम लोग ने लास्ट ईयर देखा कि
फॉरेन एफआईआईज ने काफी पैसा पुल आउट कर लिया, लगभग 35 to 40 billion dollar, राइट? बट नॉर्मली इन एनी अदर सिचुएशन इन द पास्ट व्हेन एफआईआईज ने पैसा पुल आउट किया बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स, राइट, वी हैव सीन द मार्केट्स करेक्ट बिग टाइम. बट दिस टाइम हैव यू सीन दैट द डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो है, राइट, इक्विटीज में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड दैट हैज बीन अ बिग रेवोल्यूशन, राइट? काफी नए इन्वेस्टर्स आए हैं कोविड के बाद, राइट? ऑनलाइन जैसे आपके प्लेटफॉर्म में होगा ग्रो और एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लॉट ऑफ न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम इनटू द मार्केट, एंड दे आर ट्राइंग टू इंडिया में इक्विटी ओनरशिप काफी कम है. आई मीन इफ यू लुक यूएस वगैरह में ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आउट ऑफ द परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स इक्विटी विल बी लाइक 30-40%. इंडिया में ऑन एन एवरेज इज अराउंड 4-5%, राइट? काफी मात्रा में कम है. तो उसको अभी भी काफी गुंजाइश है कि लोगों के इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी के एलोकेशन बढ़े. और तो एक ट्रेंड दिख रही है कि इक्विटी की तरफ जो रुझाव है वो बढ़ते जा रहा है, और डोमेस्टिक फ्लोज ने काफी हद तक बैलेंस किया है. तो वोलेटिलिटी जो थी इंडियन मार्केट में पहले दिखती थी वो काफी कम हो गई है. आई थिंक ये सब मद्देनजर रखते हुए कि आई थिंक जो करेक्शन एक्सपेक्टेड थी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो नहीं आई है. हालांकि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि करेक्शन कभी भी आ सकती है, मार्केट ऐसा एक तरफ नहीं जाने वाला है. बट अगर करेक्शन आती भी है मार्केट में, राइट, इंडियन इकोनॉमी और आउटलुक इतनी स्ट्रांग है कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वहां पे, राइट? Okay, we won't see a deep correction into our markets, and so investors should continue to invest. I think हालांकि ये लेवल पे अभी ज्यादा एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, राइट? एलोकेशन आपको एसेट एलोकेशन जो आपको यू स्टिक टू दैट एसेट एलोकेशन, आई थिंक देन इट शुड बी फाइन. Yeah. So I mean, like you rightly said, अभी जो है बहुत सारे new investors add हुए हैं equity market में, which is so true. And I think that's mainly because शायद अब investors ज़्यादा aware हैं. पहले क्या होता था कि अगर मार्केट्स गिर रही हैं या एंटिसिपेशन है मार्केट्स गिरने का तो लोग पैसा निकालते थे. बट आई थिंक नाउ पीपल आर एंटरिंग द मार्केट्स व्हेन मार्केट्स आर फॉलिंग, और जब एंटिसिपेशन है कि मार्केट्स गिरने वाले हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग ज्यादा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, and that is why we see more retail participation now in the market. So मुझे आपसे बहुत सारे questions पूछने थे related to sectors and why is India doing well, but I think आपने वो अपने answer में काफी cover कर लिया था. So one question is कि we all know कि when it comes to the IT sector, वो अभी जो है is going through its own challenges, right? अभी वो underperform कर रहा है. तो क्या हमें टेक फंड्स के लिए contrarian view लेना चाहिए? Do you think we should take a contrarian view for tech funds? Yeah. सो द टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, आई मीन पोस्ट कोविड हमने देखा था कि उसमें काफ़ी तेजी आई थी. ओके, काफ़ी इंडियन कंपनीज को जो स्पेंड टुवर्ड्स डिजिटल हो रहा था उसका बेनिफिट मिल रहा था, एंड ओवरऑल कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो भी काफ़ी बढ़ गई थी. अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन द यूएस जो कंसर्न्स है उसके कारण हमने देखा है कि ये सेक्टर में ग्लोबली ऑल्सो करेक्शन हुई है. बट आई थिंक अगर देखा जाए जो टेक डिजिटल जो है, राइट, जो ट्रेंड है दैट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, राइट? और हालांकि नेक्स्ट ईयर अगले साल यूएस में स्लो डाउन और रिसेशन की बात चल रही है, उसके कारण जो स्पेंड है टेक्नोलॉजी आईटी की तरफ वो कम होगा. बट जिस मैंने पहले बताया कि अभी जो स्पेंड है पहले जैसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज जो मेंटेनेंस के लिए था, राइट, अभी जो स्पेंड हो रहा है वो डिजिटल की तरफ हो रहा है बिकॉज और फ्रंट एंड के लिए हो रहा है. काफी कंपनीज को डिजिटल उनकी फुटप्रिंट है वो बढ़ानी है, और टू सेल्स अगर कॉम्पिटिटिव आपको रहना है तो वो स्पेंड आपको करते रहना पड़ेगा. तो इसके मुकाबले हमें लग रहा है कि ये टाइम में जो अगर डाउनटर्न होगा यूएस में भी तो आईटी जो कंपनीज की जो ग्रोथ है करंटली अराउंड 14-15% जो टॉप लाइन है वो नीचे आ सकती है, बट फिर भी अराउंड 8-10% ग्रोथ रहेगी. और ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, एंड इंडियन आईटी कंपनीज हैव ओवर द इयर्स जो स्पेंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो की है टू मूव अप द वैल्यू चेन, ताकि उसका बेनिफिट मिलेगा. तो एक तरह से आप सही बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रेरियन व्यू अगर लेना है अगर नेक्स्ट 3 ईयर व्यू के से, तो आईटी सेक्टर में देख सकते हैं. हालांकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं. एक अच्छी बात है आईटी कंपनीज की कि जो बड़ी कंपनीज है और स्टेबल कंपनीज है वहां पे उनकी कैश फ्लोज काफी अच्छी हैं. ये कंपनीज काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो बनाती हैं, और
कंटिन्यूसली जो पैसा आ रहा है कि उसको आप इधर डिविडेंड दे रही है और बाय बैक कर रही है, उसके कारण आपको कंपनीज को स्टॉक को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो और डिविडेंड यील्ड भी कंपनीज की काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी जो सेक्टर है और आईटी डिजिटल फंड अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक तरह से आउटलुक जो है स्टेडी रहेगा। डाउनसाइड यहाँ से भी करेक्शन होने के बाद वैल्यूएशंस ठीक है, अभी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, और एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है ये डिजिटल की तरफ से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप 3 साल का व्यू लेते हो तो ये सेक्टर में आप कॉन्ट्रेरियन व्यू जरूर ले सकते हैं। So Mahesh sir, another question for you is, अभी हम सबको पता है कि हमारा चाइना के ऊपर कितना डिपेंडेंसी है, यू स्पोक अबाउट इट एज वेल। तो अभी जब हम कमोडिटी सेक्टर की बात करते हैं, राइट, एंड व्हेन वी लुक एट कमोडिटी सेक्टर करंटली बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन चाइना, आप कमोडिटी सेक्टर को कैसे देखते हैं कोपिंग इन द लॉन्ग रन? तो लंबे समय में कमोडिटी सेक्टर कैसा करेगा? The commodity sector, you've seen because of global slowdown concerns और चाइना में जो लॉकडाउन अभी हो रहा है उसके कारण डिमांड में काफी इम्पैक्ट हो रहा है, और commodity prices, स्पेशली मेटल प्राइसेस, हैव कम डाउन शार्पली। एंड जिस तरह से ग्लोबल आउटलुक है, ग्लोबल ग्रोथ नेक्स्ट ईयर ऑल्सो स्लो विल बी स्लोअर देन व्हाट इट इज दिस ईयर। And China also is still struggling because China economy जो पहले grow कर रही थी around more than 6-7% is likely to grow at around 4-5% or even lower. So demand for commodities will be subdued, and इसलिए commodity के लिए outlook अगर देखा जाए तो short term के हिसाब से ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है कि it will move up। हालांकि इंडियन कंपनीज जो है, राइट, कमोडिटी सेक्टर में स्पेशली स्टील और एल्यूमिनियम, जहाँ पे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, लाइक काफ़ी इंडियन कंपनीज यहाँ पे एक्सेस टू रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन ओर हुआ, टिस्को, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो दे कैन स्टिल मेक मनी। एंड आई थिंक ओवरऑल ग्लोबली अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो नई कैपेसिटीज नहीं आ रही है, राइट, ग्लोबली कोई कैपेसिटीज कमोडिटीज में नहीं डाल रही है। तो वंस दिस साइकिल प्लेज आउट, आई थिंक over a longer term, I think some of these companies are able to survive that, and then I think India में फिर भी growth है, right? Domestic growth is still there. So I think Indian companies के लिए यहाँ से अभी अभी ये तो worst cycle है. I mean the prices what we are seeing is the bottom of the cycle. तो यहाँ से I think if you're able to manage it, right, and make some profits, and your balance sheet is good. एक अच्छी बात हुई कि इंडियन कंपनीज, काफी कंपनीज हैं, और लास्ट 2 साल में जो अच्छी प्रॉफिट्स बनी थी कमोडिटी सेक्टर में, बिकॉज प्राइसेस वर वेरी हाई, कंपनीज ने डेट काफी कम कर लिया, राइट। सो जो रिस्क रहती है कमोडिटी कंपनीज को बिकॉज ऑफ हाई लेवरेज डेट की, जब भी प्राइसेस कम, प्रॉफिट कम करती है और अगर आपके पास डेट भी ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा होता है। तो वो काफी मात्रा में डेट कम हुई है। सो हालांकि आउटलुक इतनी अच्छी नहीं है कमोडिटीज के लिए एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म, बट काफी कंपनीज की प्राइस में भी फैक्टर इन हो गया ऐसा लग रहा है। बट हमें अभी तक इस सेक्टर में जब तक डिमांड ड्राइवर्स नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे काफी आउट परफॉर्मेंस होने की संभावना कम है। Okay, great. Thank you. So I think now let's move on to talking a little bit about other segments. So for example, बहुत सारे जो there's always a constant battle, क्योंकि I think कुछ लोग होते हैं जो equity में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो real estate में विश्वास रखते हैं, right? उनको लगता है कि real estate हमें अच्छे returns देगा, and which option generates better returns, ये इसमें कोई defined answer नहीं है। But keeping this in mind, आपको क्या लगता है कि equity funds जो हैं प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के मामले में, कंसिडरिंग जब हम रियल एस्टेट की बात भी करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और रेंटल यील्ड्स इंडिया में काफी कम है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि equity funds versus properties, real estate, what is better? Yeah, so each asset class has its own risk and return and advantages, disadvantages है। But if you look at, see, India में अगर देखा है तो if you look at a traditional investor or a saver, right, large amount of money is into property, right? आप total assets का देखोगे, right, property में सबसे ज़्यादा है, equity में काफी कम है। But if you look at long term returns, right, long term returns equities के हैं, I mean around
13-14% रिटर्न मार्केट के अगर देखा जाए। प्रॉपर्टी में रिटर्न्स कैन बी वेरी, राइट? आप कुछ एक सेक्टर में और एरिया में देखोगे रिटर्न्स, somebody can invest and make sure people think they are making great, but if you look at on an average across the top 6-7 metros, right, the returns in the long term has been around 8 to 9%, right? This is because of capital appreciation, and then there is some amount of rental yield here. Yeah. So returns have been actually not just about 9 to 10% in that range. So there is clearly, I think, over a longer term, equities on an average, I'm saying, right, would give superior returns. So then it makes a case that for your savings, right, and for long term capital appreciation, I think equities should be a better asset class. Also, equities में आपको advantage ये है कि the friction cost is lower, right? Like you said, in property में आपको stamp duty, and now the stamp duties have gone up quite a bit. So that is initial cost, okay, which you have to pay. Also liquidity, जो है म्यूचुअल फंड, if you're investing into equities or through mutual fund, आपको liquidity तुरंत मिल जाती है उसमें, right? You put in redemptions within 2 days, okay, you will get the money in your bank account. Whereas in the property, it's not always as liquid, and sometimes when the market is not that great, finding a buyer and this thing, it takes a lot of time to do that. So from that perspective, also, I think the equity is much better from in terms of instantly if you want to get money. And also from a taxation perspective, also I think the return long-term capital gains tax on equity is much lower. So if you factoring all these things, I think for long-term wealth creation and for your savings, okay, clearly I think equity should have a better allocation in your portfolio than property. But from a diversification perspective, you should also have some investment into property, but only to that extent, right? I mean, current, as मैंने बताया, I mean, people have more disproportionate allocation to property in their portfolio. I think looking at the advantage of investing in equity, both in terms of return perspective and also from a liquidity perspective, I think I would advise that investors should look at more towards equity for long-term wealth creation than investing into property. Yeah, I mean, fair enough, right? I mean, when it comes to real estate, आप उसको parts में नहीं बेच सकते हो. अगर आपको बेचना है तो पूरा property एक साथ बेचना पड़ेगा. That's Right. So what is your take on multi-asset funds? तो जैसे एक तो आप पहले हमें ये बताइए कि multi-asset funds होते क्या हैं, and then as an investor क्या हमें उनमें invest करना चाहिए? So first of all, multi-asset funds are funds which invest across various asset class, and primarily it is equities, debt, right, gold, and also now, okay, some of the funds have come which are investing into commodities. So it's not into real estate, okay, other physical assets, excluding that. So that's how what are multi-asset funds. And the advantage of multi-asset funds, I think investors should look at multi-asset funds, okay, because while investing into pure equities over the long term will give good returns, but equities are also more volatile, right? And we know that different asset classes go through various cycles, right? कभी equities अच्छा कर रहा होगा, तभी debt would be doing not doing all that well. When equity is not doing well, debt will give better returns or gold could give better returns. So when you have a multi-asset fund, okay, the volatility, okay, goes down a bit, quite a bit, and a lot of investors actually are worried about volatility. See, typically, investor is slightly risk averse. He doesn't want to see too much of a drawdown, right? जब भी markets correct होती है, तो काफी परेशान हो जाते investors and then try to take out money, right? So a multi-asset fund, because of the diversification across asset class, and each asset class is different, not so correlated, आपको volatility काफी कम हो जाती है, और returns आपको will get returns probably average returns across some of these asset class. So you might not get returns which are like pure equity funds, okay, which are into mid-teen returns or long-term returns which are there around whatever 13-14%. Here the returns will be slightly lower, but there'll be lower volatility. And that I think is also an important aspect, okay, which investors should look at when making investments. And many times investors want to put into one single fund, okay. If you want to choose, you don't have to decide, okay, how much I should allocate towards equity, कितना मुझे debt में डालना चाहिए, कितना मुझे gold में डालना चाहिए. So through this multi-asset fund, you automatically get an allocation, okay, across these asset classes, and to some extent there's a leeway for the fund manager to change that allocation depending on what is more attractive. कहाँ पे risk return at that point in time is more attractive, he can make those changes.
सो इन अ वे दैट डिसीजन जो आपको कहाँ पे कौन से एसेट क्लास में कभी इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन फंड मैनेजर लेता है विच इज और फंड हाउस लेता है विच इज वेल इन्फॉर्म. So I think I would say that for normal retail investors who wants to put money into say one fund and is worried about the volatility, I think the multi-asset funds become a great options to really participate through the mutual fund route and get exposure across the various asset classes. या थैंक यू. अब हम अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में बात कर ही रहे हैं. हमने रियल एस्टेट के बारे में बात करी. लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट गोल्ड, राइट. तो हमें ये पता है कि अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आइडियली नॉन इमोशनल फॉर्मेट्स जैसे गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन क्या आप हमारे व्यूअर्स को इन दो के डिफरेंस बता सकते हैं, गोल्ड फंड्स वर्सेस गोल्ड ईटीएफ्स, एंड विच वन इज बेटर? So I think either one is fine, gold ETFs and gold funds. Okay, the advantages is like ETF में अगर हम invest करते हैं तो आपको it's just like buying a stock into the exchange, right? Immediately you can buy and you can sell that stock. Immediate liquidity you can get. Whereas investing into a gold fund of funds, right, is like investing into a mutual fund, right? तो वहाँ पे आपको जैसे म्यूचुअल फंड में आप अप्लाई करते हो, you can do that, right, into the gold fund of funds. And you can also, the good thing about investing into fund of fund is that okay, you need not have a demat account, right? If you're investing in ETF, it's just like investing into stock. You need to create a demat account. और काफी जो इन्वेस्टर्स है, स्मॉल इन्वेस्टर्स है, काफी लोग के भी डिमैट अकाउंट्स नहीं है, right? So if they want to invest, then for them it is better to invest through a gold fund of funds. And just like in a mutual fund, you can also have an SIP going on, right, into a fund of fund. So I think for a normal investor, I think fund of fund would be a better option, because if he doesn't have a demat account, he can still invest into those funds, just like investing into a mutual fund. He can also use the SIP route if he wants to systematically invest, right? Because वहाँ पे भी गोल्ड में कभी इन्वेस्ट करना है, कैसे टाइम करना है, बहुत मुश्किल है. So in that perspective, but if you want, somebody wants to some of large investors, okay, who want to immediate liquidity or want to take have demat account, then they can look at the ETF route. Okay, fair. Thank you. So महेश सर, क्या आप अभी हमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में बता सकते हैं? कंसिडरिंग आइडियली क्रेडिट रिस्क फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? डू यू थिंक क्रेडिट रिस्क फंड्स अच्छा ऑप्शन है, कंसिडरिंग अभी के टाइम में जो है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, राइट? सो डू यू थिंक हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? So credit risk funds fall in the category of debt products, right? वहाँ पे वहाँ पे there are duration funds and liquid funds. And credit funds are essentially investing into buying into corporate bonds, and many investors are also buying, besides investing into fixed deposits, they also look at company fixed deposits, right? So I think for investors who are looking at slightly better returns, right? Because in credit risk fund, you will take some credit risk, okay, investing into typically AAA or AA kind of corporates, and you can get a slightly better return than investing into a normal kind of a debt fund over a longer period of time. So from that perspective, I think one can look at credit risk fund, but only for investors who have got a slightly higher risk appetite. Because in credit risk fund, there is also a risk of some of the corporate companies, okay, especially in a market or economic down cycle, okay, there could be some losses, okay, which could be there. But if you are managing the fund in a very diversified manner, just like in a mutual fund, that's what mutual funds do, the risk is much lower. So overall, I think, हालांकि at this point in time, the yields on the corporate bond side is not that attractive, because आपको government bond में ही आपको अच्छे returns मिल रहे हैं, और short term rates are also very strong. But I think as we move forward, as the economy improves, as the demand for credit goes up, I think we think the returns or the attractiveness of the credit risk funds will increase, say 6 to 9 months down the line. And I think investors can then look at some of the credit risk funds, okay, to enhance the yield on the debt side. And just like investing into a fixed deposit, right? If you take one should take a slightly longer term view there, right? Unlike investing into a liquid fund, okay, that you can take a one. If you're taking a 3-year view, then it makes sense. You will also get the benefit of indexation over there, right? When you're investing into a debt instrument or a debt fund for a 3-year period,
you get the benefit of indexation. So the आपके जो long term capital gains tax है, which are then almost closer to what you have on equity taxation. So I would recommend that down the line, say 6 months down the line, I think credit risk funds will start to look more attractive because the yields will look better, and investors with a slightly higher risk appetite can look at investing in these funds with at least a 3-year view. Okay, brilliant. Thank you. So I think now let's move on to how to build an equity portfolio, क्योंकि I'm sure हमारे जो viewers हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अगर उनको अपना equity portfolio build करना है तो कैसे करना चाहिए, right? तो generally अगर देखा जाए तो stock investing को थोड़ा मुश्किल माना जाता है, confusing माना जाता है, and इसीलिए हम बोलते हैं कि mutual funds में invest करना चाहिए. लेकिन at the same time equity mutual funds में इतनी सारी categories हैं offered by multiple asset management companies. तो अगर कोई इन्वेस्टर अभी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो फर्स्ट स्टेप इन इट सेल्फ इज वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? सो एज अ बिगिनर वो कौन सी कैटेगरीज हैं ऑफ एक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिससे एक इन्वेस्टर को शुरू करना चाहिए? सो व्हाट आर सम ऑफ दोस एक्विटी फंड कैटेगरीज एन इन्वेस्टर शुड स्टार्ट विद? Yeah, so you're right. I think इतने अभी funds है, इतनी categories होगी है कि it's very difficult, and there are so many fund across fund houses. So I would say a normal first time investors participating in a pure equity fund, if you look at it, then I think you should be looking at a large cap fund, right, or a flexi cap fund, because these are the two core funds, okay, which should, because large cap funds, they give the benefit you're investing into the top 100 companies, which are very well established companies. These are kind of blue chip companies, market leaders, and the chances of going wrong or something is much lower over there. And a flexi cap fund will give you to play across the breadth of the market, right? Between large cap, mid cap, and small cap, with the fund manager taking a call where to invest or how much to allocate to large cap, depending on the attractiveness of each of these segments. So these two categories, I think, should be the core for first-time investors who is wanting to invest into pure equity funds, I would say. Right? And then over a period of time, he can add to that a mid-cap fund or a small-cap fund, and then a thematic funds also, right? Because there are a lot of thematic funds, जैसे आपने पहली बात की digital India fund, okay, which to play the digital theme, or you want to play the banking sector, then you have the banking and financial services fund. If you want to play the consumer overall, the whole India consumption story and the next new generation, okay, which is investing, then you can play that through a consumption fund or a Gen Next fund. So that can be laddered up, okay, later on. And even for a first time investors who is slightly cautious about investing into equity, whether he undecided कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और कि वेट करना चाहिए कि मार्केट करेक्शन होगा, मार्केट इज लुकिंग एक्सपेंसिव, एंड फॉर दोज इन्वेस्टर्स आई थिंक दे कैन कम इन थ्रू अ बैलेंस एडवांटेज फंड, राइट? जो है वहां पे द एसेट एलोकेशन, how much to put into equities and debt, is decided by the fund manager depending on the attractiveness of the market, right? If the markets are more expensive at this point in time, then the equity allocation would be lower, and as the market becomes more attractive relative, then the equity allocation is increased. So in that scenario, it also takes care of the investors dilemma कि टाइमिंग कभी करूँ, कभी मार्केट में अभी आऊँ कि वेट करूँ. So that can be resolved through by investing into a balanced advantage fund, I think. So I think these are the categories of fund which I think first time investors should look at, and then obviously as he matures and has an experience, then he can look into all the other various categories which I mentioned about. Yeah, I mean, I completely agree with you because I feel जो relatively safer funds से अगर हम शुरू करेंगे, हमारा experience अच्छा होगा, हमारी सीख होगी, we learn from it, and then we can slowly graduate to small cap, sectoral, thematic, as you rightly said. Yeah, great. So मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में हमेशा कंफ्यूजन रहता है. इन्वेस्टर्स ऑलवेज थिंकिंग कि मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें. ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम टू सम एक्सटेंट दे आर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो हम बोलते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट? तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप दोनों हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप? So I think nothing is like better. I think each fund has its own kind of characteristics. So investors should understand that. Like in a flexi cap fund, it invests across market capitalization. और वहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट, कि कितना उनको लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप में रखना है, एंड इज अ फुल फ्लेक्सिबिलिटी, एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्टिवनेस, okay, of stocks, okay, he can change that dynamically. Multi-cap fund, on the other hand, there is a
minimum requirement of investment into say mid cap, which is 25% has to be in mid cap stocks, 25% has to be in small cap stocks, and the balance can be in large cap stocks, right? तो वो हिसाब से क्या एक डिसिप्लिन रहता है, right? Investors know that this is what I will get minimum, and in a sense that multi cap actually give you a good diversification, right, across the sector. So that is the merit of investing into a multi cap fund, okay, which it gives a good spread across small cap, mid cap, and large cap. At least minimum, okay, that kind of investment which can be done. So I would say that initially, as I said, for a core of your portfolio, it should be a flexi cap fund, right? A large cap and a flexi cap fund, because you would want the fund managers to take that call. But as you move approach, I think a multi cap fund can also be a good addition to the portfolio, because it gives a good representation across small cap, mid cap, and large cap, and that can also be a good alternative, okay, to a flexi cap fund. Sure. Okay. Perfect. So, tax saving is a very very important thing. जब भी मैं सेशंस करती हूँ मुझे लगता है कि आधे लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही करते हैं, बस जितना टैक्स बचाना है उतना इन्वेस्ट कर दिया साल का, उनका हो गया. अब ईएलएसएस फंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आई थिंक टेम्पटेशन जरूर रहता है कि हर साल वो अलग अलग ईएलएसएस फंड में डालना चाहते हैं. सो डू यू थिंक दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी, या फिर हमें एक ही ईएलएसएस फंड में डालना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? See, normally I would advise that whether the ELSS or any other listing category, right? Okay, in a particular segment, if you're looking at like large cap or whatever you choose, there's no need to invest across multiple funds, right? Because then there's too much. I mean, you can at best probably look at a couple of funds, right? Just to get diversification across a fund house, right? So similarly for ELSS category also, I think once you've chosen a fund, a good fund to invest, right, based on initial आपका जो filtration process है, if I identified a good fund, I think that's best to stick to that fund and continue to invest in that fund. At best, you could have one more fund for just to diversify the risk. Okay, okay. In case that particular fund goes through a particular cycle, because each fund also goes through their own cycle. So you can probably look at one more fund in that category, but stick to those funds which you have shortlisted and continue to invest unless there is a reason, okay, to shift because of whatever reasons. It could be a significant underperformance or something has gone wrong. But otherwise, I would say stick to the funds which you have chosen and continue to every year input in those funds rather than adding multiple funds, because too much of a bread to really manage and you don't know what you have, and then tracking becomes a big problem. Yeah. I mean, आपको क्या लगता है आइडियली एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? We get this question asked a lot, right? And there's no right or wrong answer to this. लेकिन आइडियली आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? Again, it depends on the investor also in terms of when as you said, with early investors, right, or in the initial stage, you will focus on only a few categories, right? Yes, I mentioned large cap. Okay, within that, if you want to diversify, right, across a fund, because you want to have some diversification, right, you could have probably two funds, okay, in that category, or at best three funds, not beyond that. I mean, ideally, I would say two funds in that category. So that will multiply, right? So if you have chosen like 3-4 categories, okay, which I will be initially only the 3 categories, then at best you should have say 6 to 8 funds, right, over there. As you move forward, right, and diversify across this thing, then that can increase. But at no point I should say that investors, I've seen investors who've got like 50, 60, 70 funds over a period of time. I don't see any reason to have more than say 15 funds, right? Okay, across, even once you have really become mature investors and have diversified across categories, I don't see any reason to have more than say around 15 funds. That's a good amount of diversification across segments, categories, and across fund houses. Fund houses, yeah, fair enough, absolutely. Okay. So now अगर हम एक्टिव फंड्स की बात करें, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप फंड्स देखें, तो उन्होंने जो है बेंचमार्क को इतने अच्छे से बीट नहीं किया है इन द रीसेंट पास्ट. सो डू यू थिंक देयर इज अ केस फॉर पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स, एंड डू यू थिंक हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? So yeah, you're right. I think index funds or ETFs has now become kind of again alternative to the actively managed funds, and investors are looking at it. And there has been some amount of a challenge in the last, especially after 2018-19, in terms of funds beating the benchmark, because that time the market breadth was very narrow. Only few stocks did well.
So that is a challenge. Okay, which is there are at period of times where actively fund managers funds could underperform the benchmark. Though I think over a longer term, I think active funds can still do deliver better returns. But I think to really, uh, I mean, as a solution to that, right? You don't know at certain point in time, especially when you're investing with a say tactically a market में invest कर रहे हो, right? Say with a view कि आपको मेरे को market participation लेना है अभी, and I want to invest in the market because I think that tactically एक साल के लिए I want to increase my equity allocation. Then you can choose to invest through a passive fund because then you are trying to play the market call, right? A short term call or 1 year view or incrementally आप जो position बढ़ा रहे हो आपकी right asset allocation that you can do it through a index fund or a ETF fund because at least you're sure if you will get returns equal to the invest because you don't know active fund in the short term how it will do right over a longer term it will outperform but आपका जो long term money है right जो आप investment कर रहे हो equities में I think that can go into the actively managed fund because over a longer term good actively managed funds can generate a better alpha vis-a-vis this thing आपको जो extra return मिलेगा it might not be very high, right? In the past, active managed funds have given returns in excess of around 4% or 3 to 4% or even 5%. That might come down to even say 1% or 1.5% or 2%. But that 1% compounded over a longer term can still be significantly adding to your overall kind of a corpus, what you will do, because the power of compounding can be still good. So I would say your long term money, which you're investing and creating that in equities, can go to actively managed funds tactically what you want to play or incrementally okay what you want to increase the exposure I think that is best addressed through participating through index fund or ETF fund. I mean, again, it's all about diversification, right? And Yeah, why only in active funds when we have the option of investing in passive yeah, funds? so I think that is also now a viable option which investors should look at especially to play the market beta जो बात करते हैं Hmm. that is best play through a passive fund. Yeah, right. Okay. तो फिर इंडेक्स फंड्स में एंटर करने का राइट टाइम क्या है कंसिडरिंग अभी देखें तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों इतने ऊपर हैं राइट सो शुड वी टाइम आवर इंडेक्स फंड्स देन So again, as I said, timing the market for your long-term investments is always very difficult, या right? What is the right time to invest? And as you rightly said during a conversation, we said earlier, the people have been waiting for a market correction, right? A significant. We had some correction, but the market bounced back also equally fast from this level, and I don't think investors would be able to participate in that. सो वो टाइम करना आपको जो है वो बहुत डिफिकल्ट तो आपका जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है राइट व्हाट यू आर बिल्डिंग अप अ कॉर्पस फॉर लॉन्ग टर्म और डेली आपकी जो सेविंग्स आ रही है वो आपको सर्टन एलोकेशन यू हैव टू कीप टू इक्विटी बेस्ड एलोकेशन दैट आई थिंक यू शुड कंटिन्यू डू एंड दैट्स बेस्ट वे टू डू इट थ्रू एन एसआईपी एंड दिस थिंग एट एवरी पॉइंट इन टाइम but sometimes you want to take advantage of the market right when there is a excessive correction in the market or markets are looking very attractive okay that's the time when you want to probably take advantage and आपको equity allocation बढ़ने की you want to do that that's the time when you can as I said for that extra this thing you can probably do that through the index fund at that point in time but even otherwise, when you want to participate in the market, timing the market, it becomes very, very difficult. I mean, even people, a lot of advisors, okay, tell you, and we also say that, okay, we should, this is the now right time, market will see a correction, but market doesn't really behave as we would like to do it. So the best way is to do it through even if you're investing into index fund or take part, you to spread it out, right? Do an STP or STP is another route, okay, to invest in lump sum money you want to invest in the market, right? आपको अगर lump sum डालना है, right? Normal savings will continue through the SIP route, but lump sum also what you put in, especially at this point in the market. I think when the markets, the risk reward is long term it is good, but short term there are a lot of concerns which are there. So I would advise that you put that investments okay through an STP route, spread it out over the next say 6 months. I think in that period you will capture the markets ups and downs. ups and downs yeah fair so of course timing the market may not be the best thing लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या हमें हमें अगर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो वो व्हेन इज द राइट टाइम सो व्हेन शुड वी रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियो So rebalancing the portfolio means basically agar in a particular asset class because of outperformance or underperformance, your allocation increases, right? Then your target allocation. जैसे कि आपने अगर टारगेट किया हो कि मेरा इक्विटी एलोकेशन शुड बी अराउंड से 50% should be in debt. But now because equity markets have done very well in the last say 2 years or 3 years, that would have gone up, say 50% would have gone to 70%.
right? I think one should do that. And rebalancing, I think very difficult. I mean, it depends on individual whether you want to rebalance that portfolio on a monthly basis or a 6 monthly. But I would say that rebalancing should not be done on a regular basis or a monthly basis. Like, you can say 6 month or a 1 year time frame is what you can look at to review the portfolio, and then rebalance the portfolio back to your target allocation. Okay, what you have decided. Okay, at the beginning, right, based on a risk appetite what you choose here. So I think a 6 month to 1 year would be a right period to rebalance the portfolio. I don't think one should look at rebalancing during a very short term interval or a weekly or a monthly. I think that's not necessary, because you should lay. Sometimes when the asset class is doing well, it's better to let it play out a bit, right? Like, and the cycles normally last for say 1.5, 2 years at least, right? In any particular asset class, 2 to 3 years. So if you do that, say on a 6 monthly or a 1 yearly basis, then you allow that to appreciate, okay, and then rebalance after the appreciation happens, and that would be a better outcome. Perfect. Okay. Okay. So apart from this, हमें एक equity fund से exit कम करना चाहिए, right? Rebalancing is fine, not very frequently. लेकिन अगर हमें exit करना है, so मान लीजिए कि अभी हमें बहुत loss हुआ है equity market में. So should I continue to hold the investment की wait करते रहें जब तक improvement हो, या फिर हमें exit करना चाहिए? Is there a right or wrong strategy to this? I would say one should not exit into equity funds, okay? Because I mean that's what to experience. As I told you earlier, right? The biggest money has been made sitting on those investments over a longer term. You exit only when you require that money, right? For example, okay, or you are targeted certain kind of a horizon, right? Okay, I had said, okay, I will invest this money for a particular, say, 10 years down the line for my child's education or for any other kind of a large expense which you want to do. That portion, then accordingly you will exit, okay, at that point in time. Yeah. But otherwise, your long-term savings and equities, I think one should continue to hold on to it, even if the markets go down, right? Because there is a tendency key, and we have seen, I mean, in the last 30 years, I've seen markets have seen big corrections, right? We have seen corrections of 50, 60% also. But people who has just continued to hold on to stable investments have made good returns, right? There's a blip over there, but it again bounces back. So I think, and the mistake people do normally is that when markets are down, there's a lot of concern, and you see your portfolio being eroded by around 40% or 50%, and that's the time you pull the strings. And once you do that, exit, तो आपने वो loss permanently book कर लिया, right? So then you're permanently booked that losses, and there is no way again you can make up for that. Whereas time and again we've seen that markets, because the underlying economy and the companies again tend to bounce back. That losses, if you hold on to it, okay, you will again recover the losses also and make further gains on the initial investment what you have done. So my advice would be that you should not sell, okay, your equity investments only to the extent to rebalance the portfolio, or if there is certain emergency or you need to dip into it, or if you had planned a certain investment with a target kind of horizon, okay, for certain expenditure which you would incur down the line, then one can plan a planned exit. वो भी exit should be planned exit, right? Because आप एक दिन में बोलोगे मेरे को, if supposing if I had invested for my child's education, right, and I require that money 10 years down the line, आप बोलोगे कि मैं वो 10th ईयर में पैसा पूरा निकाल दूंगा, तभी आपको मालूम नहीं है कि मार्केट कैसा होगा, right? Okay, that time the market could be down and you could be exiting. So then you should then start timing that exit, right? Say a couple of slowly start to exit, okay, rather than waiting for one particular day where you'll exit into the market, because that time would not be the right time. You don't know what time it could be. Yeah. So that should be your, I think, strategy if at all you want to exit from mutual fund. Otherwise, just stay on to your holdings and let it compound. I think that's the best way to generate wealth. I mean, I think that was such an interesting perspective where you said कि अगर आपने पैसा निकाल लिया है loss के time, तो आपने permanently loss book कर दिया है. But if you hold on to it, then you have the chance of recovering that loss, which generally. Yeah, and we've seen that. As your time horizon over a period, markets tend to bounce back, right? Any crisis you look at it, we've seen so many crises. I mean, markets in the next say couple of years or 2 to 3 years, they tend to recover from those lows. Yeah. बल्कि अभी मुझे लग रहा है रिकवरी टाइम शायद थोड़ा कम होता जा रहा है. पहले जब रिसेशन होता था रिकवरी टाइम्स वर मच लॉन्गर compared to now, right? 2008 we took about a year, and now I think this recession we took a few months. So why is the recovery time reducing? What do you think is the answer? So that depends on in terms of what has led to the crisis, right? Okay. So if
reason for the crisis is much more structural or this thing, then it takes time for the economy to really bounce back. See, in this during the COVID period, it was more about disruption, okay, which was caused because of COVID. It was a lockdown, right? So there was nothing wrong structurally. There was not kind of a financial crisis which had broken down the balance sheets and this thing. So and also what has happened is also now the government and the central bankers are quick, okay, to respond based on the past experience. Okay, when there is a crisis, when the economy is down, they'll quick to respond in terms of cutting interest rates, providing more liquidity, right, and providing a stimulus. So Yeah. the response is much faster, and that gives hope to the market, and the market tends to they correct also very sharply, Correct. but then the bounce back is also equally good because the central banks or the regulatory authority or the monetary authorities or even the governments will provide a stimulus to stimulate the economy, and the market tends to factor in ahead of time. See, market always factors future, not what the current situation is. And if you see that stimulus coming in, the bounce back is much sharper, and that's what we've seen in the recent crisis. Perfect. Okay. So I just have the last two questions for you before we end this conversation. So I think first what I want to understand is कि अभी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, राइट? एंड कंसिडरिंग कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, विच मीन्स लोग जल्दी रिटायर हो रहे हैं लेकिन लंबा जीने वाले हैं. So obviously there should be a very serious focus on building a good retirement corpus, right? तो हमें अगर एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है तो हमें कौन से तरीके के फंड्स में फोकस करना चाहिए? So I think retirement के लिए, again, you're right. People tend to believe that as you move towards your retirement, you should have more of debt in your portfolio, right? Because you will take a lower risk and increase your debt allocation. But again, you also have to create your retirement corpus also should grow at slightly higher than the inflation rate. तो ये आपको उसकी जो value है, right? Okay, will be there, right? At least equal. Otherwise, you are not really doing justice, right? So in that scenario, I think it's always important to have a right asset allocation or a mix into your retirement corpus also. And obviously, you can categorize into two parts, right? Something which you require immediately for a day-to-day needs, and something which you require for a slightly longer term to take care of that. So I think in that context, I think it's important to have a right fund which will also give you some amount of appreciation, okay, with lower risk and volatility, right? Better than your fixed income or better than inflation rate. So in that context, I would say that funds like say like an asset allocation fund, right, which invests across asset class, so that reduces your volatility because during retirement you don't want to see that and you require some regular income also to coming through, Yeah. right? So a fund like an asset allocation fund which invests across asset class will give you good returns. I mean, kind of it will give the mix of all the returns like equity, okay, which have high returns but volatile. Okay, so on a blended basis, it will give you returns which are slightly better than say investing into fixed income with lower volatility. So that can be a one fund, okay, which can when retirement people can look at for to build their retirement corpus. Or you can also look at a fund which is more between equity and like a balanced advantage fund, right, where the equity allocation is more dynamic, okay, depending on the asset allocation. Those are also funds which tend to be slightly lower volatile in the down market. Okay, they will fall less because the equity allocation would also normally be adjusted depending on the market valuations. So that can also be a good option to invest, and then you can have a regular STP, rather STP or a dividend, right? Withdrawal plan, okay, where you can systematic withdrawal plan, SWP as you call it, right? To take out money from that to make your monthly withdrawal can be done from that fund to meet your day-to-day requirements. And the balance corpus tends to give you reasonably good returns. So returns there could be somewhere between what you get into equity, long-term equity returns and debt. It will somewhere in between, but again with a lower volatility. So I think that those kind of funds would be your ideal options for someone to build up a retirement corpus. Obviously, some long-term money which is there for retirement, even something which you will not require for the next 5 to 10 years, that can also be the pure equity fund, less aggressive, like a large cap fund or a flexi cap fund. I think one can look at. Because like I said कि अगर रिटायरमेंट इतना लंबा होने वाला है, कोई 50 की एज में अगर रिटायर होता है एंड 80 तक अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलें, तो रिटायरमेंट इन itself is so long term, right? So then there could be some form of allocation in equity funds as well. Yeah. Surely. Okay. So the last question for you is बहुत सारे investors
we love reading, and we would love to know which are the books that you would recommend for us to read, investments related, to learn more about investments. Yeah, so there are many books which are there. I think over a period of time, I mean, there are classic books which are there, right? Which is the Essays of Warren Buffett, which talks about his learning, and he's been a big investor, right? Who has created wealth for himself and for investors. So I think learning from some of these investors, and these are classical investment styles, right? Okay, which will work across market cycles. I think one can look at it for really somebody who is willing to look at intricacies and basics about investing, okay, of stock, security analysis, the Intelligent Investors, okay, which is another book, okay, which is there, which by Benjamin Graham, which Warren Buffett actually uses. So these are very old books which are there, which one can look at, and there are a lot of new books which have come up recently. I think which one can look into. So I think these fundamental old style books, okay, which are, because investing is, some of it is rich common sense, right? It's more about for new investors. If you do common sense investing, I think that is good enough. For more evolved investors, there are a lot of books which you can read. Now there are books which have come up, but I mean these two books I think would be the ideal ones. Okay, I remember one book which I read, One Up on Wall Street. Okay, by Peter Lynch. Okay, was during my time, which was a book which actually opened up my eyes in terms of uh, how to invest into market. Okay, looking around you, right? You look at companies around you, what they are doing and this thing, and on that basis, how to really invest into companies. That is one of the books which I grew up with. Okay, great. So, Mr. Mahesh, just one last thing. Any new NFOs that we should look forward to from your fund house? So, I mean, being a fund house, old funders, we've got most of the products, okay, which are there. I think we have across the spectrum, which is there. But I think we talked about some time back about multi-asset fund, right? So that is something which is a concept which is evolving, and we see as a great opportunity over there for investors to be investing across asset class, right? Including equity, debt, gold, or even commodities. So that is one category which we are looking forward to, right, to come with the NFO, okay, whenever we get an approval, and that can be again a good product, especially for investors who are looking at only one fund to invest into, right? अगर आपको एक ही फंड में डालना है and you get an exposure across, I mean, that can be just one fund which one can look at, and since you're investing over asset class, it reduces the volatility, and it can be an ideal product even for a first time investors who is first time investing into the markets. Sure. Great. Thank you so much, Mr. Mahesh. I hope I hope our viewers had a great time. I'm sure they would get a lot of learnings from you. So thank you so much for all your time. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Wow, what an interesting conversation with Mr. Mahesh Patil. I hope आप सबको बहुत सारी learnings हुई हो इस particular episode में, and I do hope आप सब हमारे नए episode के लिए इंतजार कर रहे हैं. तो मैं quickly जो हमने points discuss किए थे उनको summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले Mr. Patil ने हमें ये बोला कि मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जो उनके अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, उनको जल्दी बेच देते हैं. लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड ऑन करके रखते हैं, उनके ऐसे स्टॉक्स मल्टी बैगर में काफी कन्वर्ट होते हैं. एट द सेम टाइम पिछले एक साल में इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने बहुत नेगेटिव्स देखे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इन्फ्लेशन हो, जिससे सारी इकोनॉमीज जूझ रही हैं, जिसकी वजह से काफी सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है. एंड एट द सेम टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाती है. तो ऐसे टाइम में हमें कैश जो है रखना चाहिए, और एसआईपी के जरिए से अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स तो करने ही चाहिए, लेकिन जब मार्केट करेक्शन हो तब हम लमसम के जरिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये इसलिए है क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हमें नहीं पता रहता है कि अगला मार्केट क्रैश कब आने वाला है. मिस्टर पाटिल ऑल्सो सेज कि अभी काफी कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है क्योंकि उनकी डेट कम है, जिसकी वजह से भले इंटरेस्ट रेट बढ़ा हो लेकिन उनको इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है. एंड कम टू लुक एट इट, ही ऑल्सो सेज कि भले ही बहुत सारे FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला हो रिसेंटली, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनको रिप्लेस किया है. इसीलिए अगर हम ये सोचते हैं कि डीप करेक्शन होने वाला है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, तो उसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको असेट एलोकेशन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. फिर हमने आईटी सेक्टर के बारे में भी बात किया, एंड वी रियलाइज कि इंडियन आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा किया है कोविड के बाद, लेकिन अभी वो इसलिए था क्योंकि फोकस था डिजिटल के ऊपर. लेकिन अब यूएस में स्लो डाउन हो रहा है तो शायद डिजिटल के ऊपर फोकस थोड़ा कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में द स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट,
कि जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो अच्छा करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसकी वजह से उनके पास जो फ्री कैश फ्लो है उनका फोकस होने वाला है बायबैक्स और डिविडेंड के ऊपर। फिर हमने रियल एस्टेट के बारे में भी बात किया कि क्या रियल एस्टेट इक्विटी से बेटर है। तो मिस्टर पाटिल ने ये बोला है कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इज अ बेटर असेट क्लास, क्योंकि रियल एस्टेट के अपने अलग चैलेंजेस रहते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाई स्टैम्प ड्यूटी या फिर लिक्विडिटी या फिर टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज। इसीलिए रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करें तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए अलॉन्ग विद गोल्ड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बेटर माना जाता है। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स का फोकस होता है वैसे लार्ज कैप कंपनीज जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वैसी कंपनीज में पैसा डालते हैं लार्ज कैप फंड्स। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं दे इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस एंड सेक्टर्स एंड थीम्स। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है इक्विटी मार्केट में तब आप मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी कैसे हैंडल करनी है तब आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में डाल सकते हैं। मिस्टर पाटिल देन सेज कि मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस जो हैं डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में वरी होता है, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फंड्स में मिनिमम 10% एलोकेशन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में जाता है। फिर हमने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वर्सेस गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर पाटिल सेज कि दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप एसआईपी के जरिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीजन इन्वेस्टर हैं तब आप गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स को मल्टी कैप फंड्स के साथ कंपेयर किया एंड मल्टी कैप फंड्स लाइक ऑल ऑफ अस नो कम से कम इन फंड्स में 25% एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैप्स रहता है, विच मीन्स 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। तो मिस्टर पाटिल कहते हैं कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड से शुरू कर सकते हैं, विच कुड बी योर कोर पोर्टफोलियो एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स मल्टी कैप फंड्स में कर सकते हैं फॉर ट्रू डाइवर्सिफिकेशन। फिर हमने ईएलएसएस फंड्स के बारे में भी डिस्कस किया कि कितने ईएलएसएस फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर पाटिल सेज कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में 2 ईएलएसएस फंड्स हैं तो वो बहुत हैं जस्ट टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एएमसीज, और आप अपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ईएलएसएस फंड चेंज करना है तो सिर्फ तभी करिए जब आपका एग्जिस्टिंग फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स के बारे में बात की एंड मिस्टर पाटिल सेज कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट हायर अल्फा। तो इसलिए लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एक्टिव फंड में पैसा डालना चाहिए। और जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो टैक्टिकल एलोकेशन होता है उसमें मदद करते हैं। और कभी भी मार्केट्स को टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी ऊपर आ सकती हैं। तो इसीलिए इंडेक्स फंड्स में आप एसआईपी के तरीके से ऑन अ रेगुलर बेसिस इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब भी मार्केट करेक्शन हो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंस के बारे में भी बात करी एंड मिस्टर पाटिल सेज कि अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप हर 6 से 12 महीने में एक बार अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इक्विटी में से पैसा सिर्फ तभी निकालना चाहिए या तो अगर आपको बहुत फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है या फिर आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने वाले हैं। और जब हम फाइनेंशियल गोल अचीव करने की भी बात करते हैं तो उसके लिए भी एक प्लान्ड एग्जिट होनी चाहिए ओवर अ फ्यू ईयर्स। फिर मिस्टर पाटिल ने हमें कुछ बुक रिकमेंडेशंस दिए जो हम पढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उन्होंने बोला या तो हम दी एसेस ऑफ वॉरेन बफे पढ़ सकते हैं, या फिर वी कैन रीड अ बुक बाय मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कॉल्ड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, या वी कैन रीड अनदर बुक बाय मिस्टर पीटर लिंच व्हिच इज कॉल्ड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। दीज आर ऑल गुड रीड्स। सो आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। आई होप यू एंजॉय, आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। So of course keep watching, subscribe to the Groww Mutual Fund channel, and of course like, share this video. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.